Good morning, dear students. Welcome to home classes of Government Model High Secondary School Boys Punch. Myself Ghulam Rasool, your teacher in education subject. Dear students, today we will discuss from Unit 1st, that is curriculum. Today our topic of discussion is meaning and importance of curriculum. So let us get started. Now let us try to understand the meaning of curriculum. Dear students, the word curriculum is said to have been derived from the Latin word curri, which in English means to run or a runway. जो लफ्ज़ करिकलम है इसका प्लूरल है करिकला या करिकलम्स आप कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो वर्ड करिकलम है ये एक लातीनी लफ्ज़ कररी से अखज़ हुआ है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है दौड़ना या दौड़ने की जगह। तो गोया जो कोर्स है जो करिकलम है ये एक दौड़ने की जगह है, एक पाथवे है, एक रनवे है जिस पर दौड़ करके हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। तो टीचर इज़ द गाइड एंड टीचर हैज़ टू गाइड द स्टूडेंट्स एज ऑन विच पेस ए स्टूडेंट हैज़ टू रन ए रेस ऑन दिस रनवे। तो टीचर को जो देखना है कि बच्चा जो है वो किस स्टेज ऑफ लाइफ का है और उसको कितनी पेस पे दौड़ना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं इस रनवे पे उसको करनी है। तो गोया करिकलम एक रनवे है, ठीक है, जिस पे दौड़ करके रन लगा के रेस लगा के इस कोर्स को परस्यू करके हम अपनी मंजिल मकसूद अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। एंड सम पीपल कंफ्यूज द टर्म करिकलम विद द सिलेबस। कुछ लोग जो है समझते हैं कि करिकलम को सिलेबस समझते हैं, हालांकि सिलेबस जो है वो अलग चीज़ है। सिलेबस इंक्लूड्स ओनली सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड, इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ करिकलम। सिलेबस इज़ नॉट करिकलम, सिलेबस इज़ जस्ट ए part of the curriculum. Curriculum is a broader concept which reflects the curricular and co-curricular trends in the institution, that is the courses of study, the aims and objectives of education, the methodology of teaching and evaluation techniques. It is a means to realize the educational philosophy and objectives. It aims at the holistic development of the child. For better understanding of the concept of curriculum, let us try to understand this chart. The curriculum is divided into two parts. It has two aspects, you may say, the scholastic aspect and the non-scholastic aspect. The scholastic aspect of curriculum includes syllabus and it is related with only the intellectual dimension of our personality. Whereas the other aspect of curriculum, that is the non-scholastic aspect of curriculum, includes co-curricular activities. You may say the physical, social and emotional aspect of dimensions of the personality are covered under this scholastic aspect of the curriculum. Or you may say that the curriculum aims at the holistic development of personality, whereas the syllabus is confined only the intellectual dimension of the personality. The scholastic aspects include only the syllabus, whereas the co-curricular activities, that is the non-scholastic aspect of curriculum, includes co-curricular activities, and co-curricular activities are further classified as literary activities and non-literary activities. Under the literary activities, we may enumerate debate and discussion, library work, school publication, writing, brand trust, etc. And under the non-literary activities, we may discuss physical activities, cultural activities, civic development activities, leisure time activities, outdoor activities, social activities, and aesthetic activities, etc. Dear student, we have already discussed the two aspects of curriculum, the scholastic and non-scholastic, and we have discussed the syllabus is confined only to the intellectual dimension of the personality, whereas curriculum aims at the holistic development of the personality. To clear the confusion between the syllabus and curriculum, one must try to understand that syllabus indicates the framework and amount of the knowledge and facts which will be imparted to people of different age level. अब हर एज लेवल पर बच्चे की जो इंटेलिजेंस होती है वो डिफ़र करती है, ठीक है ना, इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, फिर एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में।
तो उसी को देख करके हमारे जो कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स बच्चे को क्या देने हैं किस स्टेज ऑफ लेवल पे। तो करी जो सिलेबस है ये सिर्फ हमारी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन से साथ ताल्लुक़ रखता है। इन अदर वर्ड्स यू में से दैट सिलेबस इज कन्फाइंड टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, whereas curriculum is a broader term. Syllabus is just a part of the curriculum. Curriculum में क्या है? It aims at the holistic development of the child. It includes the totality of students' experiences within the educational process, classroom, library, laboratory, workshop, playground, teacher people contact. तो क्लासरूम करिकुलम जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है जो हमारे स्कूल के अंदर और बाहर होती हैं। इसमें जितने भी एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं, क्लासरूम का काम, लाइब्रेरी, लेबॉरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, टीचर पीपल कांटेक्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी करिकुलम में आती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया लिटरेरी एक्टिविटीज़ और नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सिलेबस। सो वी मे से दैट करिकुलम here the emphasis is on the learner and the primary consideration is to develop the personality of the to the fullest. ठीक है, curriculum aims at the development of personality to the fullest. It aims at the holistic development of the child, whereas syllabus touches only the intellectual dimension of the child. Now let us try to understand the different definitions of curriculum included in your syllabus. We have already discussed that in education, curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in educational processes. Our first definition is of James Ross. James Ross is of the opinion that curriculum includes cognitive, affective, and cognitive activities. We have already discussed that curriculum aims at the holistic development of the personality. When we talk about personality, we name the dimensions of personality as physical, intellectual, social, emotional, aesthetic. The other way to name the dimensions of personality are like cognitive, affective and cognitive activities. तो जो करिकुलम है उसमें कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अफेक्टिव भी होती हैं और कोग्निटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ यू में से इंक्लूड लैंग्वेज, लिटरेचर, अर्थमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. दे ऑल आर रिलेटेड विद आवर mind, the intellectual dimension of our personality, whereas the affective activities are related with our emotions and as such include music, art and poetry, whereas cognitive activities include activities which satisfy the basic need of food, cloth and shelter, which may be called practical arts and capacities of work. The second definition is of Cunningham. Cunningham is of the opinion that curriculum is a tool in the hands of artist. He called teacher as artist and curriculum as a tool. The curriculum is a tool in the hands of the artist. Why? To mold his material. What is the material of the artist? The student. Who is artist? He is a teacher. According to his ideals. What are the ideals of the artist teacher? His aims and objectives in his studio. The studio is school. Once again, let us repeat this definition. Curriculum is a tool in the hands of the artist, that is teacher, to mold his material, that is student, according to his ideals, that is aims and objectives, in his studio, that is school. The next definition is of Tagore. He says curriculum consists of subjects, activities and occupations and actual living and community service. Dear student, Tagore was not satisfied with the existing curricular content. He believed that the curriculum must provide fullness of experience to the younger learners. तो वो उन्होंने जो करिकुलम को जो इंटरप्रेट किया वो सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं किया जो एक आइसोलेशन में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि सर्टन एक्टिविटीज़ जो है वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उसके उनके कंसेप्ट जो था करिकुलम का, टैगोर जी का, दैट वाज अ ब्रॉड बेस्ड. इट इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स लाइक language, literature, history, geography, science, music, etc. And so far as activities, he recommended dance, dramatics, drawing, painting, and actual living and community service.
What Dr. Zakir Hussain ji said about curriculum, he is of the opinion that curriculum implies study of languages, sciences and technology, social sciences, art, craft, music and physical education. It involves courses, activities, experiences and thus complete environment of the institution. We know that Dr. Zakir Hussain was an educationist by his own right, third in line of the educationist to grace the office of the President of India. Dr. Zakir Hussain suggested to utilize curricular, co-curricular and social activities of educational institution to inculcate the right ideals and attitudes in young learners. He believed that the content of education should be educationally productive. At the same time, he warned all work is not educative. It is educative only when it is preceded by mental effort. The next is the Secondary Education Commission that we read SEC 1952-53. This is the date of the commission, and it is also named as Mudaliar Commission. According to this commission, curriculum does not mean only the academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that the child receives at school. तो करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट जो रस्मन और रवाजन जो है स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें क्या शामिल है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मजमूई तौर पर वो शामिल है। द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमारे मजमूई तजर्बात जो हैं वो इसमें शामिल हैं जो बच्चा स्कूल में रहता है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। Now let us discuss the importance of curriculum. The curriculum, that is one of the most important items in the educative process. What to do and how to do are very essence of curriculum. Curriculum, in fact, the warp and woof of the whole educational process. The importance of curriculum lies in the fact that curriculum is the only means for achieving the educational objectives. करिकुलम हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसका एक अहम हिस्सा है। क्या करना है और कैसे करना है, पूरे एजुकेशनल सिस्टम में हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये सब कुछ जो है वो करिकुलम में डिस्कस किया जाता है, करिकुलम डिसाइड करता है। तो करिकुलम जो है एक बुनियाद है एजुकेशनल सिस्टम की। तो एजुकेशनल सिस्टम जो है इसके जितने भी अगराज व मकासद जो हैं उनको हासिल करने के लिए, उनके हसूल के लिए करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप जो है ये देखें कि हमने पहले डिस्कस किया था कि दैट करिकुलम एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उसकी डायमेंशंस भी गिनी जाती हैं, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल। अब हर स्टेज ऑफ लाइफ पे इंसान की पर्सनैलिटी की जो फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होती जाती हैं। अब किस स्टेज पर हमको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज़ जो है रिकमेंड करनी है और कितनी इंटेंसिटी में करनी है और वो एक्टिविटीज़ किस तरीके से करवानी है, उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, ये सारी बातें जो है वो करिकुलम में डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होगा, हमारा एवाल्वेशन असेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करिकुलम के अंदर जो है डिस्कस की जाती हैं। हम आगे हेडिंग्स के अंडर जो है इसको डिस्कस करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। And the importance of curriculum can be discussed under the following headings. The first heading you may take the acquisition of knowledge. The curriculum helps the student in the acquisition of knowledge by studying various subjects laid down in the curriculum. तो करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सिलेबस भी उसका एक हिस्सा है करिकुलम का, तो वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है स्टूडेंट को पढ़ने के मिलते हैं। तो उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है, एक्सपेंड होती है। तो करिकुलम हेल्प्स इन द एक्विजिशन एंड एक्सपेंडिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड मोर एवर देयर आर लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ देयर टू स्टूडेंट में एक्वायर you may say the knowledge. The second point, you may say the achievement of educational aims.
Without suitable curriculum, aims of education can't be achieved. In the absence of curriculum, it would be impossible to do anything systematically. So we have already discussed that curriculum plays an important role. Without curriculum, it is really harder to crack to achieve the aims and objectives of education. तो किसी कंट्री के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम जब बनाया जाता है उसके कुछ अगराज व मकासद, अहम अगराज व मकासद जो है वो तय किए जाते हैं। तो उन अगराज व मकासद जो हैं उनको हासिल करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा जो टूल है दैट इज़ द करिकुलम। तो सो यू मे से दैट करिकुलम हेल्प्स in the achievement of educational aims of the educational system of any country. The next point is the fixing limits. Curriculum helps in fixing limits of teaching and learning. It helps in determining the work of the teacher as well as that of the people. We have already discussed that at different stages of life we have different physical, intellectual, social and emotional characteristics of our personality, and we are supposed to impart knowledge and give activities to the student according to their capacities. तो करिकुलम एक लिमिट जो है वो फिक्स कर देता है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर के लिए कि आपको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना और कैसे एवालुएट करना, और स्टूडेंट कितना ले सकता है और उसको एवालुएट किस तरीके से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द क्राइटेरिया ऑफ सूटेबल टीचर। क्राइटेरिया ऑफ सूटेबल टीचर कि किस किस्म के टीचर हमको चाहिए, हमारे किस स्टेज पर कौन सी एक्टिविटी और कौन सी जो नॉलेज है वो दी जाएगी और कितनी मिकदार में दी जाएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और उस नॉलेज को और उस एक्टिविटीज़ को बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमें किस तरह के टीचर्स चाहिए। तो इट इज़ द करिकुलम विच शोज विच व्हाट टाइप ऑफ टीचर are required in school. We should know what type of work they are required to do, and this is according to the requirement of the curriculum. Next, the selection of suitable method. Selection of suitable method. The curriculum enables the teacher to select suitable methods of teaching. How to teach will be determined what to teach. तो सूटेबल मेथड्स जो हैं कौन से होंगे बच्चे को पढ़ाने के या बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाने के, डिफरेंट जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए, ये सारी बातें जो है वो करिकुलम में ऑलरेडी जो है प्री प्लान्ड तय की जाती हैं। तो सूटेबल मेथड्स, कौन सी मेथडोलॉजी किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए लगाई जाएगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कौन से मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स जो वो लगाई जाएंगे, फिर बाद में उनकी एवाल्युएशन कैसे होगी, जो सब्जेक्ट मैटर हमने टाट किया है या एक्टिविटीज़ हमने जो है बच्चे को प्रैक्टिस करवाई है, तो ये सारी बातें करिकुलम में डिस्कस की जाती हैं। द नेक्स्ट 6 पॉइंट इज रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। We may that curriculum is a means to achieve the aims of education which are dynamic and go on changing with the changing social requirement. तो अगर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आपने डिस्कस जब हमने किया था तो आपको याद हो तो दैट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन वेरीज विद द टाइम एंड स्पेस, सो आर द एजुकेशनल एम्स, दे टू गो ऑन चेंजिंग, दे आर डायनेमिक, दे आर नॉट फिक्स्ड। तो जब ये चेंज होंगे तो नेचुरली द करिकुलम विल रिफ्लेक्ट द ट्रेंड्स इन एजुकेशन। फॉर एग्जांपल मॉडर्न एजुकेशन प्लेसेस द फॉलोइंग डिमांड्स ऑन द करिकुलम। What are these demands? Providing suitable knowledge. A. Providing suitable knowledge. The curriculum should include suitable knowledge which will help in the achievement of aims and education. तो बदलती दुनिया के साथ नॉलेज का पैटर्न भी चेंज होता है, ट्रेंड भी चेंज होता है, नॉलेज भी एक्सपेंड हो रही है। तो करिकुलम ये डिमांड करता है कि बदलते समय के साथ, बदलते वक्त के साथ हमारी नॉलेज भी जो रिक्वायर्ड सूटेबल रेलिवेंट जो नॉलेज है वो दी जानी चाहिए। बी. Providing suitable activities and experiences. The curriculum includes all selected activities and experiences needed for the development of people according to their social requirements. तो जो suitable activities और experiences बच्चे की stage of life, उसकी जो personality की physical, intellectual, social और emotional characteristics हैं उसके हिसाब से जो suitable activities और experiences हैं वो देनी है, वो भी करिकुलम डिसाइड करता है। तो उसी को देख करके हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल में कोशिश करते हैं।
Then providing wholesome influences. The curriculum should provide wholesome school program to develop the desirable behavior patterns in the pupils. The seventh point is the development of personality, that we have already discussed, that curriculum aims at the holistic development of personality. You may remember that when we discussed the difference between curriculum and syllabus, we discussed that syllabus is confined to the intellectual dimension of personality, whereas the curriculum includes and develops the other aspect of personality, which are the physical, social, emotional, and aesthetic. And as such, you may say that curriculum aims at the all-round development of personality. Next is the training of life. The training of life. The curriculum should be of life, by life and for life. करिकुलम जो है वो हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट स्कूल एडजस्टेबिलिटी, स्कूल से फारग होने के बाद हमने समाज के अंदर एक ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए करिकुलम हमको तैयार करता है। ऐसे सब्जेक्ट हमको ऑफ़र किए जाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे सामने लाई जाती हैं कि जिनको परस्यू करके हम जो है पोस्ट स्कूल लाइफ के लिए तैयार हों। तो इन फैक्ट लाइफ इज़ ट्रेनिंग, लाइफ एक ट्रेनिंग है, एंड करिकुलम प्रोवाइड्स एडिकेट ट्रेनिंग टू द लर्नर सो दैट दे मे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर लीडिंग हैप्पी, बेटर एंड प्रॉस्पेरियस एंड प्रोग्रेसिव लाइफ। तो करिकुलम हमको तैयार करता है ताकि हम एक अच्छी, खुशहाल, बेहतर और प्रोग्रेसिव लाइफ जो है वो जी सकें। इट मस्ट ट्रेन द लर्नर्स टू फेस द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ लाइफ। इट शुड प्रोवाइड यूनिक एंड नॉवल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल ही अलग से और बिल्कुल नए किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे जो है उनको फेस करें, उनको प्रैक्टिस करें, ताकि वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो सकें। इट शुड इनेबल द स्टूडेंट टू टैकल एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली ऑफ देयर ओन लाइफ but also of their native society, world and universe as a whole. Next comes the development of the character. The curriculum also aims at the development of the character of the students. तो हम curriculum में ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं कि जिसको पढ़ करके बच्चे का करेक्टर डेवलप होता है, उसमें उसको नेशनल हीरोज़ के करेक्टर पढ़ने को मिलते हैं, हमारे जो रिलीजियस हीरोज़ हैं उनके करेक्टर जो देखने को मिलते हैं, मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं। इसके अलावा हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें इंगेज होकर के बच्चा जो है अपने करेक्टर को डेवलप करता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं, ओबे करने की, दूसरे का हुक्म मानने की, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की, एक दूसरे की बात सुनने की। ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली करेक्टर की तरफ हमें डेवलप करती हैं, और हम इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज़ सीख सकें, हलाल हराम की तमीज़ सीखें, शर और जो शर है और ये जो भलाई है, इसमें हम तमीज़ सीख सकें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, तो हमारी जो नीड्स हैं ये ज़िंदगी के साथ साथ जो है वो चलती हैं। द नीड्स आर वोवन विद लाइफ। द नीड्स में बी अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रिफ्लेक्ट एंड प्रोजेक्ट अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइट। तो हम जो है अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ पेचीदा होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो हमारी जो नीड्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो ये एक बैलेंस करिकुलम ही है जो हमें हमारी जो नीड्स हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग आवर नीड्स, इमोशन एंड सेंटीमेंट्स। द करिकुलम शुड बी रिलेटेड विद द एक्चुअलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो करिकुलम हम कह सकते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी की असली हालात हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उनके साथ वो मुंसलिक होना चाहिए। इट शुड बी डीपली कंसर्न विद द वेरियस growing interests, skills, attitudes, aptitudes, abilities, potentialities and talents of the learner. Then comes the development of values. The development of values. The values are also developed through curriculum. The curriculum helps the student in developing democratic values like liberty, equality, fraternity, justice, respect of dignity of the individual and group living. It also helps it also develops the cultural, spiritual and social values among students. To achieve this objective, curriculum includes such type of experiences and activities. तो करिकुलम के ज़रिए ही हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जैसे
क्या हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इंसाफ, दूसरों का रिस्पेक्ट, दूसरों का एहतराम और ग्रुप में रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करिकुलम ही सिखाता है, चाहे वो सब्जेक्ट के ज़रिए हो चाहे वो एक्टिविटी के ज़रिए हो। तो एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं कि हम आज़ादी जो है महसूस करें, बराबरी महसूस करें, भाईचारा महसूस करें, इंसाफ महसूस करें, दूसरों की रिस्पेक्ट और एहतराम और ग्रुप में रहना नसीब हो। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के ज़रिए जो है, जब हमने पहले डिस्कस किया कि कल्चर, हमारे जो रिलीजियस और नेशनल हीरोज़ जो है उनके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ने का मौका मिलता है, तो उससे हमारी स्पिरिचुअल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ जो है वो भी जो है डेवलप होती हैं, क्योंकि करिकुलम में ऐसी एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ डाली जाती हैं जिससे हमारी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होती हैं। देन 12th पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। Development of citizenship. So citizenship qualities are also developed through curriculum. So curriculum helps in the development of citizenship qualities. One of the important responsibility of education is the development of citizenship. The curriculum is considered in order to achieve this aim. तो यहीं पे हमको चाहे एक्टिविटीज़ के ज़रिए हो चाहे सब्जेक्ट के ज़रिए हो, तो हमें ये मौका मिलता है सीखने का कि सिविक सेंस क्या होती है, हमें सिविक सेंस डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारे राइट्स क्या हैं, हमको क्या करना है कि हमारा मुल्क जो है वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गामज़न हो और हम मिल कर के इसको आगे चलाएं। तो ये सारी सिटीज़नशिप क्वालिटीज़ जो है करिकुलम के ज़रिए ही हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जो हैं उसके लिए भी मोटिवेशन मिलती है करिकुलम। द लास्ट पॉइंट 13, द मोटिवेशन फॉर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। इट इज़ थ्रू करिकुलम we find a chance to develop the scientific outlook and thinking about the various phenomena of the surrounding. तो हमें चाहे नॉन स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट हो करिकुलम का, चाहे स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट हो, तो उससे हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हमें ऐसी मिलती हैं जिससे हमारा साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है अपने सराउंडिंग से के रिलेटेड जितने भी हालात फिनोमिना हैं। तो इससे हमारा रिसर्च की तरफ क्रिएटिविटी जो है बढ़ती है, हमारे रिसर्च की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है और हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम जो है हमारे अंदर साइंटिफिक और आउटलुक और साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो पैदा करता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमारा जो रिसर्च की तरफ और इन्वेंशन और डिस्कवरी की तरफ जो है वो रुझान बढ़ाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट इज़ करिकुलम and then we try to differentiate the curriculum from syllabus and what is the difference between syllabus and curriculum. Then we discuss the definitions of curriculum included in your syllabus, and the last question was the importance of curriculum, which we have just finished. Hope you have got this discussion. तो आप इसको दोबारा से देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये इसमें डेफिनेशन जो है वो आती हैं और ये जो पॉइंट्स जो हैं ये आप याद कर लें। जब भी आप एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम है, तो आप वहाँ पर शुरू में लिख सकते हैं, बिफोर वी मेक एन एफर्ट टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इट सीम्स रादर नेसेसरी टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम फर्स्ट। तो व्हाट इज़ करिकुलम थोड़ा सा डिफाइन करके, नो लेट अस कम टू द पॉइंट। Now let us try to discuss the importance of curriculum under the following headings. तो ये लिस्ट जो है आप बना लेंगे सबसे पहले, जैसे ये लिस्ट मैंने आपको बताई है। तो लिस्ट बनाने के बाद जो है फिर आप करेंगे now let us explain these headings one by one। तो एक हेडिंग आपने उठाया, उसको अंडरलाइन किया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर नेक्स्ट, फिर ऐसे करके तो लास्ट में उसको आपने कंक्लूड कर देना है। तो उम्मीद है कि आज की जो डिस्कशन जो है वो आपको समझ आएगी होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बराह रास्त मुझे फ़ोन करके जो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।